आई थिंक हम लाइव हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं जल्दी से और फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, 1 मिनट दो, देख लें ज़रा थोड़ा सा। ओके, 1 मिनट दो बस। आई थिंक वी आर लाइव नाउ। ओके, एक बार मैं ये ठीक है, वी आर लाइव। आज का थोड़ा सेटअप अलग है ना, तो थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है, थोड़ा सा मेरे को तो टाइम। आज ज़रा दिख रहा होगा, वैसे तो अलग जगह बैठा हूँ मैं आज। ठीक है, तो जी, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है अक्षय। हम लोग ऑनलाइन जावा पढ़ते हैं। जावा में हम लोगों ने ऊप से स्टार्ट किया था, देन डीएसए, कलेक्शन फ्रेमवर्क, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, स्प्रिंग बूट, और अब हम जो कर रहे हैं उसका नाम है स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए हम लोग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे और उसमें JWT के थ्रू कुछ करेंगे। ये सिर्फ मैं टाइटल से बता रहा हूँ, जो मैंने तेलस्कोप की वीडियो देखा है अभी तक। और अब हम उस वीडियो को स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो कल आना था वैसे तो, पर कल आ नहीं पाया क्योंकि ऑफिस का ज़्यादा थोड़ा हो गया था माहौल, काम धंधा पानी। बट आज फिर से स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। तो आज है हमारा डाइव का डे 28। आज सेटिंग थोड़ी ज़्यादा ही मज़ेदार है, तो सही है। ठीक है, तो हम लोग फ़िलहाल शुरू करते हैं अपना टॉपिक, है ना। ओके, ये गए हम विंडो स्क्रीन पे। साथ में तुम लोग चैट में बता सकते हो जो भी तुम्हें डाउट लग रहा है, या अभी मैं जो इम्प्लीमेंट करूँगा उसमें तुम्हें लगे कि यार ये और इम्प्लीमेंट होना चाहिए तो मज़ा आएगा, वो सब बताना, मुझे अच्छा लगेगा देखने में वो। तो हम लोग ऑलरेडी इस तरह का सेटअप करते हैं जिसमें साथ में हम लोग सारा काम करते हैं, तो चलेगा। ठीक है, तो बस सब सेटअप डन, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नाइस। And now it's time to focus on security. The thing is, when you talk about software development, of course, we build projects. And then in that process, basically, we have to first learn the language, we have to learn the frameworks, and then we start implementing the project. The most important thing in a project when you build it is it should work. Of course, right? If your software is not working, then all the other aspect doesn't make any sense. So the first thing is focus on building a working product. Next is the project or the software should be stable. I mean, we build projects which works करेक्ट। and then suddenly it stopped working for a few inputs and then maybe because of some issues, it gives you other issues. Now that means your software is not stable and most of the applications which I use on my phone are not stable, right? Even it can be a banking application. I mean, the only thing which works perfectly, I think, is calculator, right? Apart from that, you will see bugs in most of the softwares and it will be. No software in the world is 100% bug proof. And if you think that one of the software is bug proof, maybe we have not done enough hard work to find the bugs. But करेक्ट। yeah, it will have some bugs. We have to make sure that you reduce the number of bugs, at least the major bugs should not be there. And by doing that, you're making it stable. So in Java also, we can do that with the help of handling the exceptions and stuff. Then the most important thing which comes here is the security. And we know the importance of security, right? And that's why on your phone as well, you implement the locks. Maybe it can be your fingerprint reader or your face unlock or using a pattern or a password. We do keep the password as 000 just to make it easy, but again, not a good idea. Still, we know the importance of security. Now, whatever we have built till this point and whatever we have learned in the project which we have built is not secure because anyone can go there, anyone can do anything with the project. What if you want to make it secure? You'll be having multiple users. Not everyone should be able to do everything. Example, if you are building e-commerce, we will be having different roles there. So someone, the seller will add the product, the buyer will buy the product, right? So everyone will have different role and they have to log in to achieve those roles. सही है। And that's how you can secure it. And that's not the only way you can secure it. There are multiple ways of securing it. But as a developer, we focus on login, logout, or with the help of username, password, or maybe some other formats. So
Yeah, so how do we implement security? Now, if you're not using Spring, if you're using a normal Servlet JSP to build web application, implementing security is a big task. I mean, trust me, if you spend 10 hours building a product, you'll be spending another 20 hours securing it. But Spring अच्छा. Security will make your work easy. How? We'll see that step by step. But then, how do we know? How do we secure the application? What are the steps you have to follow? Sometimes we feel that it is secure, and then some hacker will hack it by showing, hey, it's not secure. Then you will secure it. It works in the normal applications, but think about हाँ, banking application. बैंकिंग एप्लीकेशन, क्योंकि जावा में मोस्टली बैंकिंग एप्लीकेशंस, मतलब जावा मोस्टली बैंकिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होता है. यू कैन नेम एनी बैंकिंग एप्लीकेशन और उसमें जावा मिल जाएगा, या जावा का कोई मॉड्यूल मिल जाएगा. बैंकिंग के लिए मोस्टली जावा यूज़ होता है. इवन इफ़ यू गेट एनी if you get into any projects, most of the java projects, spring boot projects will be of, या could be of banking. So yeah, वहाँ पे हम ये वाला रिस्क नहीं ले सकते, करेक्ट, कि कोई हैकर आके हैक करेगा और हम उसे करोड़ों रुपए देंगे और टीम में ले लेंगे कि आजा भाई. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. Think about uh, healthcare records. So sometimes we are not sure how do we secure it. We don't want to wait for someone to hack and then tell us that's how I can hack your software or the application. Now to do this, we have something called OWASP. Now, OWASP OWASP. stands for Open Web Application Security Project. And what they do is every 4 years, they release some important security measures which you can take or some issues. And then you can work on those issues and make sure that you don't have that in your project. And they call it as OWASP Top 10. So if I click on this top 10 here, so you can see these are the top 10 risks of 2021. So they release this in every 4 years. So ओ वास्प टॉप 10. ओके. डेटा 2025 अभी से 2027 के 21 के ये. ओह नाइस यार. इनसिक्योर डिज़ाइन, सिक्योरिटी, misconfiguration, broken access control, cryptographic failure, identification, authentication failure. Nice, nice, nice. ठीक है. the next version or next update is expected to be coming into 2025. So depending upon when you're watching this, so you can look at the recent top 10. So this was 2017, this is 2021, and these are the measures, these are the security risk. And you can just go through this. It talks about access control, cryptography, how do you encrypt and how do you decrypt, which standards you're following, are you handling the injection attacks, then designing, is it your the way you अगर तुम लोगों को लग रहा है मैं वहाँ क्या देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक स्क्रीन में मैंने चैट खोला हुआ है, ताकि कुछ अगर तुम लोग इनपुट दो तो मैं वहाँ पे देख लूँ, तो बस उतना सा है. design your software? Is it secure? There are a lot of things which are mentioned here. I would also add a link of OWASP top 10 in the description. I already made a video on this, so you can have a watch. ओके. But make sure that you follow this to understand different security issues which we have. Okay, so the good thing is, if you are not using Spring, then you have to think about all those things. You have to implement them step by step. Now, when you use a framework like Spring, which has its own security implementation, which is called Spring Security, तेजस, हाँ हाय तेजस, क्या है, व्यूअर इंक्रीजिंग. अच्छा, नाइस यार, थैंक यू. it takes care of मज़ा most है. of these things. And it by default will say, hey, you're doing this. Maybe it will not make your web secure. So do this. And it will give you suggestions as well. It will restrict you to do certain things. And if you follow that, you're basically making your application secure. And what I'm talking about, you will get to know that in some time. नमस्कार प्रथमेश, नमस्कार. In the upcoming videos. So now let's try to build a project and let me show you how easy it is to secure your application using Spring Security. So to do that, what I will do is, first of all, let's create a new project. Of course, I can edit my existing project, but I want to show you how do you start a project thinking security in the mind. Okay, so Nice. let's go to our start.spring.io and here ठीक है, हम भी रुको. start.spring.io. we'll create a Maven project with Java language. This is 3.3.1. The group ID is com.telesco. तेलस्को हमारा ग्रुप आईडी सिक्योरिटी रख लेते हैं. The artifact ID is Spring Security Example. Of course, ठीक है. आर्टिफैक्ट आईडी स्प्रिंग सिक्योरिटी एग्जाम्पल. कूल.
You can use any name, doesn't matter. And the packaging will be Java. The Java version is 21. Now dependencies. Of course, you can secure different type of applications. Example, if you are securing your hardware, let's say I have this phone with me and I want to secure this, basically I can just keep it in a room and I can lock the room so that no one can access it. That's external security. But what if someone can hack it online? So for that, we have to build Spring Security. So I'm basically trying to secure a web application using Spring Security. So I want to have a web feature. ठीक है. I will also get DevTool just in case if I want to use that. We can also use database. See, ultimately when you say login, username login, आ गया डेटाबेस. तो लास्ट टाइम हम लोग सोच रहे थे कि डेटाबेस मतलब हमने S2 डेटाबेस यूज़ किया था जो कि इन मेमोरी डेटाबेस होता है स्प्रिंग प्रोजेक्ट में, और उसके बाद मैं सोच रहा था कि हाइबरनेट के लिए हम लोग कोई स्टेबल डेटाबेस यूज़ करते हैं जैसे माई सीक्वल या फिर पोस्टग्रेस या ऐसा कुछ, और फिर उसके थ्रू करते हैं. फिर उस वीडियो के नीचे एक्चुअली कमेंट आ गया तेलस्कू का ही, और उन्होंने हमें बताया कि स्प्रिंग सिक्योरिटी या इसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी या फिर दूसरा क्या था, 1 मिनट रुको देख ले. क्या 1 मिनट रुको तुम लोगों ने देख लिया होगा वैसे तो वो कमेंट मे बी, बट फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ. मस्त है यार, ये बहुत अच्छी बात है. हमें तेलस्कू ही गाइड कर रहे हैं तो काफ़ी कूल है वो चीज़. ये वीडियो है क्यों कंसोल वंसोल भाई, ये कैसे खुला है ये व्यू ऑन यूट्यूब. I think we are live now. रुको हाँ आई थिंक ये देखो. नेक्स्ट टॉपिक माइक्रो सर्विसेज या फिर स्प्रिंग सिक्योरिटी है ना. तो हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी भी पहले पढ़ रहे हैं ताकि आगे जाके जब हम माइक्रो सर्विसेज करेंगे ना तो उसमें मॉड्यूल्स बना लेंगे, और फिर हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो वो एपीआई हम लोग इजीली बनाएंगे. फिर तो हम सिक्योरिटी की मे बी एक अलग से ही बना देंगे माइक्रो सर्विस. बट ठीक है, तो बैक कंटिन्यू करते हैं. password, you may want to store that in database. So of course we need to have हाँ, तो database डेटाबेस हम लोग इसमें यूज़ कर लेंगे बेसिकली. as well. But maybe we can add database part later. At this point, just try to keep it simple. So we got web and dev tools. I will रुको हम भी कर लेते हैं साथ साथ ऐड डिपेंडेंसीज फॉर वेब एंड देन डेव टूल. हाँ, get now Spring स्प्रिंग Security. सिक्योरिटी. स्प्रिंग सिक्योरिटी, नाइस. Now this will make your app secure. And I will click on generate. So it will download the project. The ठीक है, हम भी जनरेट कर देते हैं. जनरेट, ठीक है. or the only thing we have to do is we have to unzip it and open that in the IntelliJ IDEA community version. So ठीक है. तो प्रथमेश यार, अच्छी खबर ये है कि इंटेलिजे में मूव होने का मैंने काफ़ी सोचा, मन बनाया है. तो आई थिंक हम नेक्स्ट वीडियो से इंटेलिजे पे मूव हो जाएंगे. एक बार मैं उसको पर्सनली यूज़ करना चाहता हूँ, बट हम लोग हो जाएंगे उस पर मूव. मुझे अच्छा लगने लगा इंटेलिजे, जितना मैंने देखा उतना. ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ चलते हैं, और डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं, डाउनलोड्स में. ये हमने डाउनलोड कर लिया, कॉपी, देन डॉक्यूमेंट्स, स्प्रिंग बूट एप्स, और यहाँ पे हम स्प्रिंग सिक्योरिटी का बना रहे हैं. तो अभी मैं इसका नाम स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोजेक्ट रख देता हूँ, और इसके अंदर हम अपना काम करेंगे. अब पेस्ट, और ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं टू बिन, और VS कोड में ओपन कर लेते हैं. ओपन फोल्डर, और स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, स्प्रिंग सिक्योरिटी एग्जाम्पल, ओपन. कूल. सही है, इनेबल कर लेते हैं, कोई बात नहीं है. देख लेते हैं एक बार चला के इसको. जावा ये रन, ठीक है, ठीक चल रहा है. टॉमकैट स्टार्टेड ऑन 8080 आ गया. ठीक है, डन है. इतना ही देखना था, बाकी देख लेंगे काम करते करते. टॉमकैट हमारा सही से कॉन्फ़िगर हो गया है, बेसिकली सर्वर ठीक चल रहा है. ठीक है जी, आगे.
Unzipping done, I will just open this project now. So this is the project. I will click on open and yeah, I got my project here. So basically I got Spring Security project and now I want to test it if this is working. So what I will do is to start with, I will disable the Spring Security part. So at this point, I will just say comment and reload the Maven changes. That's important. Now, once you reload, you don't have Spring Security in the project. So it is normal Spring Boot application. And I will go to SRC. In the main, I will create a controller because at this point, we don't have any एक मिनट कंट्रोलर controllers. And if you want to secure, you need some resource to secure, right? So let's create a resource and I will say this as a simple hello controller, nothing fancy. स्प्रिंग A सिक्योरिटी simple hello controller. रुको 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 हैंडलो कंट्रोलर अभी बना लेंगे, कोई बात नहीं. सिक्योरिटी किया कमेंट, मे बी सिक्योरिटी कमेंट किया क्योंकि वो फिर लॉगिन पासवर्ड मांगता. ठीक है, कंट्रोलर बनाना है हेलो. या एक काम करते हैं, हम लोग ना कमेंट नहीं करेंगे, हम लोग देखते हैं क्या होता है ना. बना लेते हैं And कंट्रोलर here, अपना basically what I'm going to do is, of course, I have to make it controller. And REST I'll make it REST controller. controller. I don't want to create the UIs. I will simply go for the REST endpoints. एक एंड पॉइंट हम छोटा सा ग्रीट का बना के देख लेते हैं. रेस्ट कंट्रोलर, ये तो हमने सीख लिया है अब. रेस्ट कंट्रोलर और एक पब्लिक मेथड, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप, देन ग्रीट बना लेते हैं और ग्रीट सिंपली रिटर्न कर देगा हमें हेलो हेलो. ओके, और यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट मैपिंग लगाना पड़ेगा और ये लगा देते हैं हम कि 80 पे चल जाए. ठीक है, तो एक बार अभी हमारा सिक्योरिटी डिसेबल्ड है तो कोई बात नहीं, और इसको हमने रन जावा किया, ये हो गया हमारा, चल गया प्रोग्राम. स्टार्टेड एट 80 है ना. चलते हैं वापस ब्राउज़र पे और यहाँ पे लोकल होस्ट 80 हेलो आ गया, हमारा प्रोग्राम चल रहा है. अब एक काम करते हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी, अरे कहाँ गए हो, ये रहा. तो स्प्रिंग सिक्योरिटी लगाते हैं वापस. क्यों हटाया हमें, रीज़न पता लग जाएगा. ठीक है, सिक्योरिटी लगा दिया. ऑलवेज खुद से संभालो डिपेंडेंसी. स्प्रिंग सिक्योरिटी एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंसीज आते हैं, तो मैं दिख रहा है क्या ये साइड में, अभी लोड हो रहे हैं, रुको इसको मैं बंद कर देता हूँ, मे भी ऊपर आ जाए. हाँ, तो ये हमारे पास सारे डिपेंडेंसीज आ गए, VS कोड में इस तरह दिखते हैं. सिक्योरिटी आ गया हमारे पास, है ना. और ये वर्जन 3.4 क्यों है, 3.3.4 क्योंकि हमारे पेरेंट जो है स्प्रिंग बूट पेरेंट, उसका वर्जन ये है. तो अगर आप नीचे कोई पेरेंट नहीं दोगे, नीचे कोई वर्जन नहीं दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली इससे रिलेटेड वर्जन ले लेगा. तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे. तो अब हम चलते हैं वापस से अपने ब्राउज़र पे और रिफ़्रेश करते हैं. सर्वर नहीं चलाया क्या. ओके, रन जावा. एंड नाउ अगर हम जाते हैं यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, आ गया प्लीज़ साइन इन. मे बी इसलिए हमें रोका जा रहा था कि इसे हटा दो पहले फॉर्म. ठीक है, काफ़ी कूल है यार, ये फॉर्म बना के दे दिया इसने. ये मेरा जूम ज़्यादा है क्या. ओह ओके, ठीक है, कूल है. आगे बढ़ते हैं. And here, और मैं हटा देता हूँ पहले वो, या देख लेते हैं कहाँ जाती है बात. I just want one method, and we have used this before, so I will simply say greet, and the I want to click on run. If I look, okay, so I got welcome to the Discord. Now this is the resource which interacts with. Of course, this can be a very complex resource as well, something which interacts with the database, or maybe it is doing some bigger task. It doesn't matter, right? Resource is a resource. Maybe you want to secure your a simple pen, or maybe you want to secure your gold chain. Both are resources. You will need a locker to secure it. Okay. So how do we secure this? What I want to do is, if someone requests for the homepage, it should first open the login form. Of course, right? There should be a login form. ठीक है. That means we have to create a UI for the login form. That's one. Next, when a user enters the details, the username and password, we have to verify that in the backend. How do I verify that? Maybe I need a database where I will have username passwords.
lot of steps, right? Okay, let's do that in this video, or maybe in the next video. Let's see. Okay, maybe you can judge by the length of the video how difficult it will be. So what I will do is I will just go back here to the POM, and I will enable this Spring Security because now I want to secure चलो it. सही है. And just by enabling it, let's see if the application still works. I will just reload the project and let's see what errors you get, so that you can focus on the building a login form and other stuff. Okay, so now I'm hitting the same URL, which is localhost 8080. If I enter, Why do top product companies hire DevOps engineers? Because companies that have a DevOps team tend to have a oh, this is weird and awesome at the same time. Weird because I was expecting some error, or maybe it should say something that you don't have a login form. And the awesome thing is Spring Security is giving you a login form just by adding that dependency. But the question is it just a login form or is it working? Okay, now that's tricky. First of all, I'm not sure what the username password is. I'm just guessing. So maybe the username will be user. Actually, the username is user. But what about the password? Is it the user? Let's try. Sign in. No, it's not working. So you can see it says bad credentials. So just checking something. I'm saying user, password should be Naveen. No, it's not working. Maybe it's not even picking my local, desktop name. So what will be the password and username? Username is user for sure. The password, where do I find the password? Now, if you go to the console and if you scroll up, can you see that? Oh, It says एक सेकंड. हाँ, पासवर्ड है. हम भी देख लेते हैं. वापस से इसको चलाते हैं. रन जावा. ठीक है, चल गया. यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड. ओके, तो ये पासवर्ड है हमारा. कॉपी एंड देन यूज़र नेम हमारा यूज़र और पासवर्ड हमारा पासवर्ड. साइन इन, नेवर सेव इट. हेलो आ गया. ओके, कंटिन्यू आ गया ऊपर. ठीक है, कूल है. generated security password is this. This is the password. I can simply copy this and go back here and paste it, and voila. So just by adding a dependency, it is giving you a login form. It is also giving you the logic to check if the username password is correct, and it is doing that. Okay, now let me show you. It's actually working. If I open another tab, another incognito tab here, or private window for Safari, and if I say localhost 8080, it is still asking for the login form. ठीक है. So it maintains the session as well. But if I open a normal tab, मेंटेन सेशन there's a एज new वेल. tab, ठीक है. and if I hit the same URL, it is not asking for the login form. So session is also maintaining. So a lot of things is doing behind the scene, right? This is cool. Now we got this, right? And this, एक मिनट. सेशन मेंटेन हो रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे वापस से लोकल होस्ट लिखता हूँ तो हेलो आ गया डायरेक्टली. ओके, और इनकॉग्निटो में लोकल होस्ट 8080 लॉगिन फॉर्म वापस. ठीक है, डन है. perfectly makes sense. But it also says something. It says this generated password is for development use only. Don't use it in the production. Okay, that's good. Also, we only got one password. In your system, you'll be having multiple Hi Shreyansh. users. How do I achieve that? कैसे How do हो we यार? have multiple username password? And now you might be thinking there should be some magic where Spring Security will have all the username password. No, Spring Security is magic, but it's not actually a superhuman. When I say that, or in India we say Rajnikant. I'm not sure how many of you know this context, but yeah. So Spring Security has no idea what username password you will be going to use, and that's why you have to use database. How we are going to do that, let's see in the upcoming videos, but we have to do a lot of work to secure it with the help of username password. But the main thing what it has done is it is giving you a login form. It also gives you one more thing. What if you want to log out? So you can just use a URL here and say log out, enter. It will say, are you sure? Yes, I'm sure. Log out, and then गजब. एक मिनट, हम लॉगिन हैं अभी भी. सही है. और अगर हम लॉग आउट होना चाहते हैं तो आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट. या नाइस. if you're thinking this is just a UI gimmick, no, let me just open this tab once again, and I will hit the localhost 8080. It is asking you to sign in again. So Again, logout actually works. It's not just a gimmick where you see a UI which says logout done. It's actually protecting your application. So once you log in, once you log out, it's gone.
Okay, and but yeah, there are a lot of things we have to talk about, and we're going to discuss that in the upcoming videos. But at this point, we just added the dependency for Spring Security, and it is मस्त. giving you a login form. If you want to change something, if you want to change a password, you can do that in the resource. So in the application properties, you can set your username passwords here. But again, you can only set only one username password. Maybe you don't want to go for this password every time. So maybe a super root password, you can set it here, username password. But the ideal way is to work with database. So now we got a default form using which you can log in, right? But then I want to change one thing. And then during that process, we'll understand different concepts in between. The thing which I want to change is the username and ठीक है. you are getting in the console. I don't want it. I want to have my own password. So that's one thing. But then there are certain things which you have to understand in between. First of all, who is handling the security part here? How exactly सब्सक्राइब कर दिया. थैंक यू ब्रो. when we are defining the controllers, someone else, I mean, that someone else is your page, the login page, is coming in between. How that is possible? Next, I want to talk about this session. So when you log in, I can access the same page multiple times. I mean, not just same page. In the application, if you have multiple controllers, in this case, we only have one. But let's say if you have multiple controllers, do we have to log in for each request? Not exactly, because we have something called session behind the scene. How that session is getting created, and if I want to see the session ID, can I do that? So I want to check that as well. And then what if I don't want to use a login form? What if I want to do that from a Postman? Can I do that? So Postman, basically any REST client, can I do that? So let's try that everything in this video. So first thing, how that login form is coming there when I'm requesting for the home page. See, to understand this, let's go back to the basics of Spring Web. एक See, मिनट, when एक you काम create करते हैं. रुको 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 रुको. एक बार शुरू करने से पहले अभी हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं ना. जो बात हुई है वो करते हैं. तो हमने एक अभी तक एक कंट्रोलर बनाया, हेलो कंट्रोलर. हम एक दूसरा बनाते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं रैंडम, उसका रैंडम कंट्रोलर है ना. मुझे बस ये चेक करना है कि अगर हमारा सेशन मेंटेन हो रहा है तो वो रैंडम कंट्रोलर जो भी हम बना रहे हैं उसका भी, उसके लिए भी मेंटेन होना चाहिए, है ना. अगर हमारा लॉगिन नहीं है तो हर जगह लॉगिन नहीं है, और लॉगिन है तो हर जगह लॉगिन है. तो यहाँ में भी हम एक नया बना देते हैं कुछ भी मेथड, पब्लिक स्ट्रिंग. वहाँ पे ग्रीट बनाया था, यहाँ पे रैंडम ग्रीट. कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेथड के नाम से, काम हमारा चलना चाहिए. रिटर्न, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं यो मैन, दिस इज बिजनेस. ठीक है. और रिक्वेस्ट मैपिंग लगा देते हैं. रिक्वेस्ट मैपिंग हम लगा देते हैं यहाँ पे कुछ भी नाम रख देते हैं, रैंडम नाम रख देते हैं. रैंडम हो गया क्या, रैंडम रख देते हैं. ठीक है, सेव. तो अब सीन ये है कि दोनों हमारे या तो सिक्योर होंगे या दोनों ही हमारे लॉगिन के बाद ही आएंगे. बस इतना सा चेक करना है. देखते हैं एक बार. ठीक है, फिलहाल हमें पासवर्ड यही वाला यूज़ करना होगा जो हमें यूज़र जनरेटेड पासवर्ड दे रहा है ये. बट कोई ना, पहले देखते हैं. तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट स्लैश देखा, लॉगिन के लिए पूछ रहा है. ठीक है, अच्छी बात है. और सेकंड हमारा है रैंडम. रैंडम भी हमारा लॉगिन के लिए पूछ रहा है. कूल. नाउ हम लॉगिन कर देते हैं. तो हमने रैंडम से लॉगिन किया है ना. लॉगिन के लिए यूज़र नेम यूज़र है हमारा, और पासवर्ड हमारा ये है. तो ये रैंडम पे आया. बस 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 सही है, मेंटेन कर रहा है, मतलब ये कहाँ से लॉगिन कर रहे हैं हम वो. और अब हमने लॉगिन कर लिया, और अब हम अगर यहाँ पे आए तो हेलो भी हमारा आ गया. एक बार वापस से लॉग आउट कर देते हैं. बेसिकली जो चीज़ मुझे बतानी थी, या बतानी क्या थी, जो चीज़ मुझे देखनी थी वो ये थी कि अगर मैं यहाँ से आता हूँ रैंडम से ना, जैसे अभी तो हम रैंडम से आते हैं वापस, हमने रैंडम पेज पे गए हैं बेसिकली हम लोग. और रैंडम पेज पे अगर हम लॉगिन करते हैं तो रैंडम पेज ही ओपन होना चाहिए. करेक्ट. कोई और पेज ओपन नहीं होना चाहिए. हो सकता था कि ये होम पेज पे चला जाता, बट ये रैंडम पेज ओपन हुआ है ना. तो ये एक चीज़ है. अब अगर हम फेसबुक या लिंक्डइन पे किसी कहीं पे जा रहे हैं और उस
पर्टिकुलर यूआरएल पे हम जा रहे हैं, हमें किसी ने यूआरएल दिया है किसी की प्रोफाइल का और वो लॉगिन मांग रहा है, तो लॉगिन के बाद उस पर्टिकुलर इंसान का प्रोफाइल दिखना चाहिए, ना कि होम पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं हमें फीड पेज पे। ये वाला सीन था इसका। ठीक है, मस्त है, आगे बढ़ते हैं। controller. So let's say we have this box here. This is your server, and the most important thing here is the controllers, right? So these ठीक है। are the controllers which you're calling. Now let's say this is your home controller, this is your add controller, or this is your check balance controller. So let's say if you have a bank account and you want to check your balance, so we got multiple controllers here, right? And a client will send the request, right? So that's how the flow goes, right? So client sends request, response goes from the server to the client, right? Everything is good. Of course, the object here is the HTTP request object. This is HTTP response object, which we get from the server. And this is your container. Now, if we talk about this controller here, behind the scene, these things are running on a servlet container. See, as I mentioned before, Spring Web comes into two parts. One is a servlet way, which we are doing now, and then there's also reactive way. We are not focusing on reactive here, Spring Reactive. We are only focusing on the Spring Web. Now in this, every controller gets converted into servlet behind the scene. So basically you are able to run this on Tomcat because of that servlets. So all these things, all your controller gets converted into servlets. Okay, so this is running on the servlet container. Now सही है। this is your Tomcat, which is a servlet container, right? But then before the request goes to the controller, we got something here which is called your front controller. So this is your front controller, also called a dispatcher servlet. So every request from the client, when it goes to the controller which you created, it goes through the dispatcher servlet. But before it goes from the dispatcher servlet, there are more things there. By default, we don't invoke them, or even if they are there, they are just passing it. But we can customize it. So when you add Spring Security, we are calling those things. Those things are responsible. But what are those things? So those things are your filters. So there's a filter chain here. So I don't have horizontal space. I will do that in vertical. So basically what you have is you have something called a filter chain here. So request goes from the client to the filter first. This is your filter chain, and then from here it goes to the front controller, and then from front controller it interacts with different controllers here. Now what is this filter chain? In the filter chain you will be having multiple filters. This is filter 1, let's say F1, this is filter 2, this is filter 3, and I'm not saying that you will be having all this filter by default. There might be few filters, there might be more filters. It depends upon how you configure your application. By default, there are certain filters. But then when you talk about Spring Security, it adds its own filter here. Okay. So what it does is when the request goes from the client to the server, the Tomcat, it looks for the filter first. Do we have any filters? Now Spring Security says, yes, there are filters, multiple filters, not just one. Let's check what are those filters are. In the earlier version, we used to see those filters here. For some reason, it is not coming in the console. Not sure why. So what I will do is I will ask my co-pilot to give me the security filters. एक मिनट, हम फिल्टर्स देख लेते हैं, हमें दिख रहे हैं क्या? ओके, कुछ दिख रहा है हमें। इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर, यूज़र डिटेल सर्विस, कॉन्टेक्स्ट विद एस, स्प्रिंग सिक्योरिटी एग्जांपल चल रहा है हमारा। 5 सेकंड ले लिए इसने लोड होने में। डिस्पैचर सर्वलेट और सर्वलेट कुछ खास दिख नहीं रहा। ठीक है, देखते हैं को पायलट क्या बताता है। इसको रोकते हैं। ठीक है। Okay, so you can see it is giving you a list of filters, 11 filters, but I think there are more filters which is not showing. So if you scroll down or if you scroll up, basically here, we got security context persistence filter, we got logout filter, we got username password authentication filter. Now this is what was working when we got the login form. So even if you are accessing for the home controller, it says hold on. You are not logged in first. So let me take care of it. So this filter comes into picture. Then we got login default page generator filter, page authentication filter, request cache aware filter. There are a lot of filter here, as you can see. But I think there are more which is not showing. So there are a lot of filters. Of course, you don't have to remember all because Spring Security will take care of it. But when you want to customize it, yes, you can customize those filters. Then you need to know those filters. And this filter, so F1, F2, which I'm showing here, these are those filters.
By default, it applies some filters to you, and that's why it is giving you a login form. Now, behind the scene, how this filter works is it works in a chain format. So when your request goes to the server, it says, okay, let's execute filter. F1. F1 can decide. I mean, F1, I can actually change data as well. Let's say if you want to add two numbers, 2 plus 5, it goes to the filter, it checks. I mean, using filter, you can check. Are those two numbers actually integers, or are the two numbers nice. bigger than 5? ठीक है So ठीक है whatever ठीक filter, है. whatever condition you want to add, basically you can do that in the filter. You can change the request, you can change the response as well, because response goes in the same format. So if the request goes like this, the response goes like this, right? So it goes to the filter. So you can change the request, you can change the response, and whatever you want to do. ठीक But है. here we are not changing data, we are just checking if the user is logged in or not. So one of the filter here acts like a login filter. It says, hey, the user is not authenticated. Let's send the login form. Okay, but let's say if the user is logged in already, and by sending the session ID, they can basically check if the user is logged in. Yes, don't ask for the login page. Let's send ठीक the है. request. So that's how this filter works, and it uses something called chain, as I mentioned. So this filter will send request to F2, F2 will send it to F3, F3. So there's something called next filter or do filter chain. So it goes for the next filter. I hope now things are making sense. How exactly when you call a controller, the security part is getting activated is because of these filters. We have talked about a lot of things. Now let's go for the second point, which is the session ID. So when you say the session is getting generated, because if I relaunch this, and of course it will give you a new password. Okay, this is a new password. I will just copy this because I want to re-log in, and just refresh this. Just wanted to make sure I'm not logged in. And now I'll be saying user, and this is a password, sign in. Now I'm logged in, right? And it doesn't matter how many times I refresh, I can still see the same page. It's not like it is giving me the login page. But after logout, it will give the login page. What if you are changing your browser? So when you change your browser, you got a new instance, right? A new particular application. Even that will ask you for the login. Just to show you the proof, I'm opening my Chrome Chrome, दिखेगा. localhost ठीक है. 8080. It is sending a request for the home page. Now the inspect element of Chrome is better than Safari. I've never tried on Safari. Let's try on Chrome. So I will do the same thing again. Same password. Enter. I'm signed in. How do I check this session ID? You can check it from here, right? So you can just go back here and say inspect more tools and developer tools. Okay. So here, if I refresh once again, let's go back to the network tab, and here if you can see we got continue. So basically that's a query parameter they're sending but not required. This is request for the homepage. Okay, this is a request for the homepage. I will click here, and if you see there are certain things here. One of the thing is this session ID. If I click on this, you can see session ID. So this is a part of a cookie, and this is your session ID. So that रुको हम भी देखते हैं हमारा ये चल रहा है क्या डब्बा. नहीं. ओके, रन जावा. आज थोड़ा ऐसे इंटीमेट लग रहा होगा ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया आज, पर थोड़े दिन ऐसे रहेगा अभी, क्योंकि ऐसा ही है अभी सिस्टम. 12-13 दिन आई थिंक. उसके बाद हम लोग वापस से ऊपर अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो हमने चेक किया. ओके, लॉगिन है ये ऑलरेडी. ठीक है, और नेटवर्क टैब में गए. कहाँ गए थे? मोर टूल्स, डेवलपर टूल्स, मोर टूल्स, डेवलपर टूल्स. एप्लीकेशन, सर्विस, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज. कुछ तो बताओ भाई. पेज लेआउट वगैरह वगैरह, टाइम पास ये नहीं चाहिए हमें. एक बार लॉग आउट कर देते हैं इसे. रुको, मे बी वो पासवर्ड चेंज हो गया इसलिए कुछ तो गड़बड़ है. इसको रिफ्रेश किया, इसको वापस से कॉल किया. ओके, नाइस. यार जब हम रीलोड कर रहे हैं तो एक तो नया सेशन बनना चाहिए ना, नया होना चाहिए. ये पासवर्ड नया हो जाना चाहिए, तो यूज़ नहीं करना चाहिए इसको. तो मे बी लॉग आउट कर देते हैं एक बार, कोई बात नहीं, देखेंगे इस वाले को बाद में. लॉग आउट. आर यू श्योर? यस वी आर श्योर. और रन किया, रन हो रहा है ऑलरेडी है. एक बार इसको भी रोक देते हैं.
कंट्रोल सी और वापस से रन जावा। देन अब आते हैं पेज पे। ओके चलो चलो चलो, हाँ तो यहाँ पे आया हमारा यूज़र और पासवर्ड हमें यहाँ मिल जाएगा। कॉपी पेस्ट, ठीक है। मोर टूल्स, डेवलपर टूल, ओके एप्लीकेशन हमने खोला था लास्ट, इन्होंने कहाँ देखा भाई, नेटवर्क टेक में कुकीज़ में देख लिया। ओके रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये कंटिन्यू मिला हमें, कुकीज़ में गए, जे सेशन आईडी फाइनली यहाँ पे मिल गया हमें, जे सेशन आईडी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। Number, the alphabetic numeric number which you can see here, it's actually hexacode. That's your session ID. And every time you log in, it will change. Let me show you. So we'll just refresh this and now send the request for the logout. Yes, I'm sure. And if I go to logout, new session ID, or is it the same thing? Even I forgot what was session ID before. एक सेशन का Doesn't तो matter. सेम ही रहना Let's चाहिए ना। create a new user. रुको हम देख लेते हैं। तो हमारा सेशन आईडी ACAF कुछ तो है, इसको कॉपी करके रख लेते हैं। रुको कॉपी करके यहीं पे रख लेते हैं कमेंट में फ़िलहाल के लिए, और लॉग आउट कर देते हैं। ओके आर यू श्योर? तो लॉग आउट की कॉल में AC वाला गया है। सेम सेशन आईडी सेम ही रहेगा ना, एक पूरा सेशन चल रहा है अभी, और लॉग आउट हमने कॉल किया तो ये लॉग आउट कॉल हुआ, और सेशन आईडी सेम, रिस्पॉन्स कुकी में चेंज हो गया। ओके रिक्वेस्ट कुकी में सेम था, ये 4DC है, हमारा भी 4DC है। ठीक है ओके। And I mean, new login, sign in, and request for the localhost, because you can see we don't have question mark continue there, so it says localhost, and we got a न्यू new सेशन आईडी, हाँ session क्योंकि ID there. If you can see, the number has changed. If you remember the ये हमको पता है ऑलरेडी है ना, एक यूज़र मल्टीपल सेशन आईडी होल्ड करता है अपने हर एक सेशन में। तो अगर मैं सेम यूज़र हूँ और मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी लॉगिन करता हूँ तो मेरा सेशन आईडी सेम नहीं रहेगा, नया सेशन होगा वो, एज ए नया सेशन, क्या कहते हैं उसे, एज ए नया सेशन हैंडल करेगा हमारा ये सिस्टम उसे। सही old है। number. But what if I want to print this here in the response, just to Okay. see if the session ID is changing or not? You can do that from your code. So just go back here. Now, if I want to print this session ID, what I can do is I can just go back here and get the hold on the HTTP servlet request. So as I mentioned before, behind the scene, everything is servlet, right? Even the controllers are servlet. So it will have two objects, the request object, response object. They're called HTTP servlet request object and HTTP servlet response object. I just want a request now, don't want to play with the response one. So this है। is the HTTP servlet request object, which I got hold on. Now this request object has multiple methods, and just wanted to confirm. So this HTTP servlet request should be a part of jakarta.servlet.htp package. Okay, with this object, I can simply say request dot get session dot गेट get आईडी, ID. So रुको हम भी कर लेते हैं सेम चीज़। तो ये नए वाले में तो नहीं करते, उसी में कर लेते हैं हेलो कंट्रोलर में। यहाँ पे सेशन ले लिया HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट, देन हेलो प्लस सेशन आईडी यहाँ प्रिंट करा देंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन डॉट गेट आईडी। ठीक है, एक बार टाइम भी देख लें क्या? ठीक है रुको, और इसमें प्लस कर देते हैं, और प्लस रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन डॉट गेट क्रिएशन टाइम, लास्ट एक्सेस टाइम, मैक्स इनएक्टिव इंटरवल, ओके सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, गेट एट्रीब्यूट, ओके सेशन का एक वो टाइम भी होता है ना कि कितनी देर का सेशन है, 30 मिनट्स या कितनी देर का। एक्सेस टाइम तो अलग बात है, देखते हैं एक बार गेट सेशन को।
HTTP सेशन देगा ये. Get creation time, get ID, get last access. Max interval returns the maximum time interval in seconds that the servlet will container will keep the session. अच्छा यही है max interval. ओके कॉपी और हमारे कंट्रोलर में जाके पेस्ट. ऐसे नहीं, गेट मैक्स इंटरवल गेट करना है. ठीक है, तो कितनी देर होल्ड करेगा हमें पता लगेगा. ठीक है जी, इसको एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं और इसको एक बार प्लीज़ लो साइन इन है ये. ठीक है, अच्छी बात है. तो इसको रिफ़्रेश किया, इसको ज़रा बंद कर देते हैं. पासवर्ड कहाँ गया हमारा? ये इस बार ये पासवर्ड है. ओके, तो हमारा यूज़र और पासवर्ड ये हमारा आईडी है और 1800 सेकेंड्स है ना ये. Return the object bound with specific time in this session. If no object bound under time, a string specifying the name of the object returns. क्या है ऊपर वाला? सॉरी, मैक्सिमम टाइम इंटरवल इन सेकेंड्स. इन सेकेंड्स तो 1800 सेकेंड्स इन मिनट्स करते हैं. 30 मिनट. हाँ, नॉर्मली 30 मिनट का एक सेशन होता है. ठीक है, ठीक है, फेयर. This will basically return the ID. Let's relaunch the application because we have changed the code and we got a new password. So let's copy this as well. Go back to your browser. क्या तेजस, सभी किधर रहते हो यार? मैं यूपी में रहता हूँ. घर है बेसिकली ये मेरा, यहीं रहता हूँ मैं. अभी ऑफिस खुलेंगे तो गुड़गांव में रहूँगा, बट अभी फ़िलहाल यहीं है. We'll stick to whichever browser. Safari is there. In fact, let's hit back to Chrome itself. Okay, so first of all, we'll do the, it will log out by default because we have restarted the application. No. Session is still there. Okay, so now let me just log in once again and sign in. So we are logged in and you can see we are printing the session ID as well. So if I go to localhost, you can see this is the same value, which you can see there, right? I hope you can see this font size, but yeah, this is the same thing. And every time you refresh, you will get the same session ID. And not just for this particular URL, doesn't matter which URL you go to, you will get the same session ID. But yes, if you delete your cookies, this will be gone. So you will be logged out automatically. It's as simple as that. So that's the session ID which we were trying to. करेंगे कि डिलीट ट्राई करते हैं. मोर टूल्स, डेवलपर टूल. ऐसे क्यों जा रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा. ठीक है, खैर नेटवर्क में गए, कुकी डायरेक्टली डिलीट करते हैं. रुको, लोकल होस्ट पे गए, कुकी में गए. इसको डिलीट कर सकते हैं ऐसे? नहीं. कोई सिक्योरिटी, कुकी, एप्लीकेशंस, सेशन, कुकीज़, देन कुकी, ये सेशन आईडी है, इसको डिलीट कर देते हैं. ओके, तो हमारी कुकी डिलीट हो गई और रिफ्रेश करते हैं. लॉग आउट. ठीक है, फेयर भाई, ये सब करते रहते हैं. सही है. Print, and of course we can have multiple controllers. You do that with, let's say I want to print the about content, I want to add 2 numbers, whatever you want to do, just check if you're getting the same session ID. Okay, what next? The next thing I want to do is I want to change the username password. I'm not happy with the password which is generating here. Thank you. How do I change it? See, one of the filter, which is the username authentication filter. If you remember, one of the filter we have here, which is username password authentication filter. This checks if you have your username password mentioned in the property files. If not, it will simply create its own password. What we can do is we can add the username password. So for doing that, you can say spring.security.user.name, and you can mention the name here. So I'm going for name Naveen, and spring.security.user.password, and I'm going to set this as Talisco. So the username is. ठीक है, हम भी ट्राई करते हैं. कहाँ है हमारी फाइल रिसोर्सेज वाली एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज? ये चल रहा है हमारा सर्वर. बंद करते हैं इसको 2 मिनट. क्या लिखा? स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर नेम, स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट नेम इज इक्वल टू यूजर ही रखेंगे हम दोनों. स्प्रिंग
डॉट सिक्योरिटी डॉट यूज़र डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू यूज़र, या पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है जी, सेव। is Naveen, the password is Talisco, and this is a property. Okay, I know in the community version it will not highlight much. If you're using ultimate version, this looks good. But yeah, let's use community. So now with this, let's अच्छा, restart the application and इसका देखना पड़ेगा कम्युनिटी वाला सीन। कम्युनिटी शायद फ्री है और दूसरा वर्जन शायद पेड है ना, इसलिए मोस्टली लोग यूज़ नहीं करना चाहते। एक्चुअली हम लोग ना ऑफिस में जिस टाइम थे, मतलब पुरानी बात हो गई, 2018 की बात हो गई, मैंने जावा में स्टार्ट किया था, है ना, जो तुम लोगों को पता है ऑलरेडी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम लोग इंटेलिजे पे काम करते थे। इंटेलिजे का हम लोग कुछ तो स्टूडेंट आईडी डाल के वो कम्युनिटी वर्जन नहीं और प्रो वर्जन यूज़ करते थे। बट पंगा ये था कि वो एक्सपायर हो जाता था कुछ टाइम बाद, शायद 1 महीने या 2 महीने बाद। तो उसके बाद ना जितना हमारा सेटअप होता था पूरा, तो वो हमें वापस करना पड़ता था। इसलिए मुझे इंटेलिजे से थोड़ा सा परहेज़ है। अब मैं नहीं चाहता उस पर काम करना, बट क्योंकि जावा उस पर मस्त चल रहा है तो मुझे लगता है इंटेलिजे पे हम जा सकते हैं आगे जाके। बट अभी देखते हैं। तुम लोग कमेंट्स में बताओ अगर मैं इंटेलिजे पे मूव करना चाहिए क्या। तो मैं सोचता हूँ उस बारे में, थोड़ा मेरे को वापस देखना पड़ेगा। मेरे मतलब पुराने जख्म हैं थोड़े, तो इसलिए मैं इंटेलिजे को पूरी तरह बायकॉट करना चाहता हूँ, पर वो हो नहीं पाएगा आई थिंक, क्योंकि वो काफ़ी कूल है, काफ़ी कूल था वो उस टाइम भी। देखते हैं। go back to the browser. So first, let's hit the logout, and now we are logged out. So let's try with the user. And in fact, what about the password? Is it generating the password? If you scroll, nowhere it is generating a password because it knows now that you have your own password. So let's ठीक है। try with this password first, which is Talisco. And I will say sign in. No, bad credentials. So now I will try with Naveen and Talisco. Sign in. We are in. ओके, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। यूज़र और पासवर्ड है हमारा, तो सीधी सी बात है, मतलब सीधा सा पासवर्ड है। क्लास हटाते हैं, अभी नहीं जा रहे हम वहाँ पे। हेलो कंट्रोलर रन जावा चल गया। दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो पासवर्ड क्रिएट नहीं हुआ, पोर्ट स्टार्ट हो गया हमारा। देन अब यहाँ पे हमारा पासवर्ड चल जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम गए, 1 मिनट इसको हटाते हैं लॉगिन को। हमने फिर से एक्सेस करने का ट्राई किया, बट ये इसको भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़र रखा, पासवर्ड, और ये लॉगिन हो गया। कूल। चेंज योर पासवर्ड। ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं यार। Okay, it says save the password. No, because I'm going to change it. Okay, so now if you refresh, you're still logged in and you can access it multiple times. ठीक है। Is that good? Okay, so now you have your own username password. I know what you're thinking. What about different users, different username passwords? We'll do that in the upcoming videos. But yeah, हाँ at least we can change the username password. I want to do one final thing, which is logging in through the Postman or maybe any UI tool or any REST client tool. So I do ठीक have है। Postman in this machine, so I will just fire it. So that's Postman, used it for some other URL. This time I want to hit localhost colon 8080. 8080। This is the home page and send. Okay, so you can see we got an status code, which is 40401 unauthorized. That means you are not allowed here. You know why you're ओके। not allowed? Because you're not sending the username password. ठीक है। How do we send that? So if you can see, we have a tab here, which is authorization. हम्म। And by default, there is no auth. We have to say, hey, I have a username password. And to do that, you will click on basic auth. There are multiple options here. We got JWT barrier token, multiple options. I will stick to basic auth now and let's explore others later. Basic auth. So let's enter the username, which is ठीक है ठीक है ठीक है, हम भी ट्राई करते हैं। हम लोगों ने अलग से सॉफ्टवेयर नहीं रखा है, पोस्टमैन यही चलता है हमारा। न्यू रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम गए लोकल होस्ट 8080 और सेंड अनऑथराइज्ड। नाइस, सेम है अभी तक हमारा। और अब गए ऑथराइजेशन में, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा क्या, हाँ। यहाँ पे जाके बेसिक ऑथ, यूज़र नेम पासवर्ड आ गया। तो यूज़र नेम हमारा यूज़र था, पासवर्ड हमारा पासवर्ड था, सेंड, और ये 200 आ गया और ये डेटा आ गया।
ठीक है, कूल स्टफ, ओके। is Naveen, and the password is Talisco. In fact, let's give some wrong password. Talisco1, send, still on authorize. Talisco, and we got the response. It says 200. We are happy. And it generates a new session ID because a new login. So you can see this session ID is not matching with this. So different users, different session ID. Okay, looks good. So that's how basically you can change the username password. You can access it through the Postman. Now we understood also how filter works. We have seen that in the diagram here. In this video, we'll focus ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम also लोग how कल filter स्टार्ट works. करेंगे, बस एक बार We have थोड़ा seen that in the देख लेते हैं डायग्राम को। बेसिकली फ्रंट कंट्रोलर की बात ना हम लोग पहले भी कर चुके हैं। फ्रंट कंट्रोलर मतलब हमने जैसे अलग अलग कंट्रोलर बनाए हैं यहाँ पे, हेलो कंट्रोलर और दूसरा कंट्रोलर हमारा रैंडम कंट्रोलर। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो पहले फ्रंट कंट्रोलर लेगा और वो डिसाइड करेगा कि अरे ये रैंडम वाली रिक्वेस्ट किसके पास है, होम के पास है, हेलो के पास है, या जो भी कंट्रोलर है उसके किसके पास है, और वो उस पर रीडायरेक्ट कर देगा। कंट्रोलर से पहले कुछ चीज़ें चलती हैं। अब जब हमने स्टार्ट किया था स्प्रिंग बूट या कोई भी, तो MVC स्ट्रक्चर में सबसे आगे कंट्रोलर आ रहा था, उसके ऊपर फ्रंट कंट्रोलर आ गया था, अब उसके ऊपर फिल्टर्स और आ गए। फिल्टर्स हमारे ऑथेंटिकेशन चेक कर रहे हैं, हमारे डेटा वैलिडेट कर रहे हैं, और जो 11 चीज़ें थी और भी चीज़ें हो सकती हैं वो कर रहे थे। ठीक है, ये सीन है यहाँ का। तो आज हम लोगों ने बेसिक ऑथ से बेसिकली सीख लिया कैसे करते हैं, और आगे का हम लोग कल करेंगे। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, CSRF टोकन की बात आ जाएगी, तो वो हम लोग कल कवर करेंगे। और CSRF के साथ हम लोग शायद ये भी कवर कर ले, स्प्रिंग सिक्योरिटी जो बेसिक हमारी कॉन्फ़िगरेशन है असली। तो ठीक है यार, आज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं टॉपिक, ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े ज़िंदगी में, और मिलते हैं कल। ठीक है, आज शायद जल्दी चला गया हमारा ये, है ना? हाँ, जल्दी हो गया है। ठीक है, मिलते हैं कल दिन। बाय 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 बाय। ओके।